Assalamu alaikum, dear participants. Thank you for joining the workshop. This session is about data science and machine learning with Python programming. This session will be conducted by trainer Sargaris. Sargaris, I'm making so you can continue the session. Sir, please continue now. Okay, so let's start. So सबसे पहले अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डेटा साइंस के हवाले से। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इन पाइथन। सो पाइथन प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है, जो इसमें कोर्स में इंक्लूड होता है, बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग होता है, फंडामेंटल्स उतनी सारी पाइथन की, और लैम्डास के बारे में होता है, और रीडिंग एंड राइटिंग CSV फाइल्स। ओके, द सेकंड थिंग इज दैट कि हमारे पास इसमें क्या कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन वगैरह भी होती है, और साथ ही जो कोर्स है ये आपको इंट्रोड्यूस करेगा डेटा मैनिपुलेशन और क्लीनिंग टेक्निक्स यूजिंग पॉपुलर पाइथन pandas डेटा साइंस फ्रेमवर्क। सही है। एंड ओके, सो द सेकंड थिंग इज दैट, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन है पेंडास फ्रेमवर्क के साथ, और जो कि डेटा साइंस की एक लाइब्रेरी है, और जो इंट्रोड्यूस करती है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सीरीज इन डेटा फ्रेम्स एज सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर डेटा एनालिसिस अलॉन्ग विद द ट्यूटोरियल्स। आपको इसकी वीडियोस भी दी जाएंगी, साथ में आपको लाइव सेशन में पढ़ाया भी जाएगा, और साथ में जिसमें आप ग्रुप बाय मर्ज पिवट टेबल्स, और बाय द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट जो होंगे वो एबल होंगे कि डेटा लें और उस पर काम करें, साथ ही उसे मैनिपुलेट भी करें। ठीक है। The second thing is that यहाँ पे describe common Python functionality and features। क्या सीखेंगे आप? describe common Python functionality and features used for data science। data science में जितनी Python required होती है आपको, आप सारी सीखेंगे, और उसके बाद at the end of the course स्टूडेंट्स जो होंगे वो एबल होंगे डेटा के साथ क्या कहते हैं मैनिपुलेट करने में, जो कि हमारे डेटा साइंस का बेसिक कोर्स है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा डेटा के साथ मैनिपुलेशन कैसे की जाती है, और बेसिक जो differential statistical analysis है वो भी आप अपना कर सकते हैं। The next thing is the understand techniques such as lambdas and manipulating CSV files, query data frame structures for cleaning and processing, explain distribution, sampling and t-tests। और इसमें जो आपको लाइब्रेरीज कराई जाएंगी वो है numpy, beautiful soup, pandas, matplotlib, scipy और scikit-learn। ये सारी लाइब्रेरीज आपको कराई जाएंगी, और जो सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड होंगे वो पाइथन सबसे पहले, फिर एनाकोंडा, फिर जुपिटर नोटबुक। सबसे पहले अगर हम बात करें नमपाई के हवाले से, तो नमपाई क्या है? नमपाई एक आपके पास लीनियर अलजेब्रा की लाइब्रेरी है जो कि पाइथन के लिए यूज होती है, और जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो ये है कि डेटा साइंस विद पाइथन में इसमें सारी लाइब्रेरीज जो है नमपाई के ऊपर रिलाई करती हैं। ठीक है। नमपाई में बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है उसका एरेज का, जिसमें हम एरेज में डेटा डाल के उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। एंड इन दिस सेक्शन ऑफ द कोर्स वी विल लर्न दैट हाउ टू यूज pandas for data analysis, और साथ में इंट्रोडक्शन टू pandas सीरीज, डेटा फ्रेम्स, missing डेटा ग्रुप, बाय मर्जिंग, जॉइनिंग, concatenating operations, data input and output। okay, the first main data type जो हम सीखेंगे pandas, वो डेटा साइंस में वो है pandas, और उसमें अगर आप उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, और साथ ही इंस्टॉलेशन भी होती है इसकी प्रॉपर, जिसके थ्रू आप उसे pandas और numpy को मिला के काम कर सकते हैं। सही है। The next thing is that the data science is Matplotlib, और Matplotlib जो है हमारे पास एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है पाइथन के लिए, जो कि एक्सटेंशन के साथ आती है। numpy का एक एक्सटेंशन है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म पे हम इसमें काम करते हैं, और जो कि बिल्कुल एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह काम करती है। ठीक है। सो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की,
तो मशीन लर्निंग में सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर रिग्रेशन. व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? सिंपल रिग्रेशन इज एन अप्रोच फॉर प्रिडिक्टिंग अ रिस्पॉन्स यूजिंग अ सिंगल फीचर. मतलब प्रिडिक्शन के लिए इसे यूज किया जाता है. ठीक है. Or it is assumed that the two variables are linearly related. Hence, we try to find the linear function that predicts response value as accurately as possible as a function of the feature or independent variable that is considered dataset. This is the value response y for every feature. सो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन है आपके पास, और लीनियर रिग्रेशन ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे आपने ग्राफ को बिल्डअप किया कुछ कोऑर्डिनेट्स बना के, और उसकी जो वैल्यूज उसको प्रेडिक्ट कर दिया. सही है. देन आपके पास प्लॉटली आता है फॉर इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन, जिसमें आप काफ़ी सारी किस्म की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं. देन मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न आते हैं फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. दोनों को मिला के आप साथ ही इनमें डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं. आपके पास एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, साथ ही डेटा आ रहा है आपके पास, और साथ में आपके पास के एन एन यानी कि के नियरेस्ट नेबर्स आते हैं. सिंपल पावरफुल अप्रोच to making predictions is to use the principle most similar historical examples to the new data. This is the principle behind the k nearest neighbors algorithm. और साथ ही जो उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे पास वो होंगे डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन. डिसीजन ट्रीज में सबसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, और जो उसकी डेफिनेशन है वही है, hence we can see this decision tree splitting passengers based on both categorical and continuous data to predict if they survive the crash. The first node splits the passenger based on gender. You can see that this simple decision tree decides if the passenger was female, they survived crash. Okay. So जो जिसने सर्वाइव किया उसने उसका भी दिखा दिया आपको डेटा, जिसने सर्वाइव नहीं किया उसका भी निकाल के डिसीजन बना के आपको डेटा दिखा दिया. सही है. अच्छा, अगर हम आगे चलें इसमें. सर आई थिंक चैट में कोई सवाल है. ओके. चेक. वो हाउ टू गेट पीसी एपी. क्या आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं? बेसिकली आपको जो पीसीएपी का पूछ रहे हैं, बेसिकली पाइथन सर्टिफाइड एसोसिएट प्रोफेशनल, पाइथन की प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, जिसके लिए आपको पाइथन बेसिक टू एडवांस का कोर्स करना पड़ेगा, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट जो है कहते हैं प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेशन. साथ ही पाइथन इंस्टीट्यूट भी आपको वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है. सही. और कोई सवाल? So let's get back to machine learning. So यहाँ पे आपके पास आता है रैंडम फॉरेस्ट. रैंडम फॉरेस्ट में जो है, रैंडम फॉरेस्ट आर एन एग्जांपल ऑफ एन ensemble method in which we combine multiple machine learning algorithms to obtain better predictive performance. Okay. So इसी तरह से हमारे पास डीप लर्निंग है, और डीप लर्निंग के जो यूज केसेस हैं बेसिकली वो हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, एनर्जी में है, और बिजनेस मैनेजमेंट में है, साइंस इंजीनियरिंग आर्ट में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में है, कंप्यूटर विजन में है, रोबोटिक्स में, कंप्यूटर सिस्टम्स में है, और फाइनेंस में है, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं बेसिकली डीप लर्निंग में. सही. अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे बिग डेटा की साइड पे. अब हम डिस्कस करते हैं मशीन लर्निंग, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, एआई. सो सबसे पहले हमारे पास मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. मशीन्स कैन सी, रीड, लिसन, अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट. Why now? Big data, for example, business networks, cloud applications, the Internet of Things, SAP HANA, ये सारी चीज़ें आपके पास बिग डेटा प्लेटफॉर्म पर रन करती हैं. और सॉफ्टवेयर डेवलप जिसमें आपके पास इंक्लूड होता है सबसे पहले मशीन लर्निंग प्रोसेस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स और फीचर्स, आउटकम दैट डिपेंडेंट ऑन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज. एंड मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट involves trial and error, experimentation. Outcomes are dependent on the data model. Okay.
So आगे चलते हैं उसमें and parameters, data model and parameters. Okay. So the next thing is that train, validate and test. So training जो basically आपके पास होती है optimize model parameters on training data. सही है. Validation आपके पास होती है tune hyperparameters on development data. Test आपके पास होती है approximate production performance on test data. सही है. That's it. Next thing, that data set is split into train, development, and test set, ensures model generalizes well on unseen data. Development and test should be from the same distribution training set. Okay, which is a question. Uh, the second thing is that, okay, बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे व्हाट आर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, तो यहाँ पे देखें बेसिकली यहाँ पास काफ़ी टाइप्स होती हैं, जैसे सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, रेनफोर्समेंट लर्निंग है, और साथ में आपके पास सपोर्ट वेक्टर मशीन का एल्गोरिथम होता है, के मींस क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम होता है आपके पास, और लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन का एल्गोरिथम है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्रीज हैं, रैंडम फॉरेस्ट हैं, के नियरेस्ट नेबर्स हैं. ठीक है ना. तो सारी चीज़ें जो है काम करती हैं बेसिकली डेटा के ऊपर. तो आपके पास ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा डेटा, और जितना बड़ा डेटा होगा आप उतना वास्ट फ्रेमवर्क चूज करेंगे. अगर आपके पास नॉर्मल सा डेटा है तो आप लीनियर रिग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. और अगर आपके पास कोई ज़्यादा बड़ा डेटा है तो आपको डीप लर्निंग और क्लस्टरिंग वगैरह की साइड पे जाना पड़ता है फिर. ठीक है. अच्छा. तो यहाँ पे आपके पास डीप लर्निंग की अगर पोजिशनिंग की बात करूँ तो सब फील्ड ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके. डीप लर्निंग इज न्यूरल नेटवर्क्स. Deep learning is neural networks with many layers, inspired by, not limited to, the architecture of the human. Deep learning is reality basically behind the artificial intelligence. तो आगे चलते हैं. Introduction to neural networks. सही है. So basically इसमें क्या है आपके पास, यहाँ पे देखें ये एग्जाम्पल है कि आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू कितना आइडेंटिफाइड होती है, वो खुद ही उसको एनालाइज करता है कि क्या चीज़ है. ये होता है डीप लर्निंग में. जैसे कि ऑब्जेक्ट रिकग्निशन इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग मैनी इरेगुलर फीचर्स इनटू अ होल. सबसे पहले उसने डॉग आर्क्स को डिरेक्ट किया कि आर्क्स डॉग जैसे लग रहे हैं. देन द सेकंड थिंग उसने जो की यहाँ पे आपके पास वो की बेसिकली क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो आपने अजमल साहब सवाल पूछा है, व्हाट डज क्लासिफिकेशन मॉडल डू. सो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें हमारे पास काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन होती हैं. सो क्लासिफिकेशन खुद क्या होता है, बेसिकली क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है, रिकग्नाइज करता है अंडरस्टैंडिंग ग्रुपिंग आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स इनटू प्रीसेट कैटेगरीज, जो कि एक प्रीसेट पूरा बना हुआ था मशीन लर्निंग के अंदर उसे डाल देता है. और साथ में इसके जो है काफ़ी सारे आपके पास क्या कहते हैं मॉडल्स होते हैं, जो कि आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, नेटिव बायस है, के नेबर्स है, नियरेस्ट नेबर्स है, सॉरी के नियरेस्ट नेबर्स है, डिसीजन ट्रीज है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है. ठीक है. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला मॉडल इसका यूज करते हैं. और द नेक्स्ट थिंग उसने जो आइडेंटिफाई किया है इसको आइडेंटिफाई किया, देन आइडेंटिफाई अदर बॉडी पार्ट्स, दूसरे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया, एयर्स को किया, स्नाउट को किया, लेग्स, एंड कंबाइन करके फिर इसको एक एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन में आपको शो करा दिया. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट द डीप लर्निंग. ओके. सो द नेक्स्ट थिंग इज आपके पास यहाँ पे है what is deep learning. Deep learning is an umbrella term for machine learning approaches based on deep neural networks. Deep learning is an end-to-end learning approach where features are learned
Together with the classification function, deep learning defines a cascade of multiple layers of nonlinear processing units for feature extraction and transformation. Each successive layer uses the output from the previous layer as input. Okay. Why deep learning? Performance of classic machine learning algorithms. बेसिकली जो उसमें होते हैं डीप लर्निंग वो काफ़ी बड़े नेटवर्क पे होते हैं। अब अगर आपके पास एक क्लासिक सी मशीन लर्निंग है और आप उस पर डीप लर्निंग को अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ही थका हुआ मॉडल आपका बनेगा जो कि बिल्कुल भी आपके लिए काम ही नहीं करेगा। सही, जो क्लासिक मशीन लर्निंग होती है, अब आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा, जैसे कि पूरे एक जो कंट्री का डेटा होता है आपके पास, पूरी कंपनी का डेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंट्री में 10 लाख लोग काम करते हैं तो आप डीप लर्निंग अप्लाई करेंगे जिसमें प्रॉपरली हर एक बंदे का डेटा को वो रन करता है, ठीक है, फिर उसे आइडेंटिफाई करता है, फिर उसे एनालाइज करता है। तो डीप लर्निंग एक काफ़ी रिस्की है, उसे मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास होती हैं। और जो हिडन लेयर्स होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, बेसिकली आपके पास कुछ कॉमन डीप लर्निंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें आपके पास एक हिडन लेयर्स आ जाता है। और सेल्फ लर्निंग ग्रुप न्यूरॉन्स विच जॉब इज टू ट्रांसफॉर्म इनपुट समथिंग द आउटपुट कैन यूज। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? Neuron hidden layer calculated and weighted sum of its output and adds a bias plus decides where it should be fired. Okay, so that's it. And okay, so thank you so much. Okay, thank you so much, Sir Garis, for the session. If any participant has any further query, you can ask the trainer. He's in the session. Otherwise, we will end the session. Kindly, if you have any query, you can ask to him. You can contact us through these numbers for further course detail for workshop certificate. You can message us on WhatsApp. Uh, Chat number is also provided in the chat. Thank you so much for attending the session. 20% discount is offered in all our courses. So if you want to register and avail the discount, kindly register before 31st March. Thank you so much. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.